Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 61st lecture of this series of CRPC. Now let's see section 469. The period of limitation in relation to an offender shall commence on the date of the offense. अब मान लो offense अगर यहाँ पर हुआ, the offense took place on this date. The counting as per first clause starts from here. जिस दिन offense हुआ तो counting उस date से start होगी as per first clause के अनुसार. Then further they are saying where the commission of the offense was not known to the person aggrieved by the offense. अब मान लीजिए किसी घर में चोरी हो गई, जैसे आज चोरी हो गई, तो आज से काउंटिंग चालू हो जाएगी. द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम टुडे. बट सपोज आज चोरी हुई बट द ओनर डज नॉट नो दैट थेफ्ट वाज कमिटेड टुडे, और ओनर को पता चला आज से 10 दिन बाद, तो फिर काउंटिंग आज से नहीं होगी. द डे ही केम टू नो अबाउट द थेफ्ट, वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी. सो व्हाट दे आर सेइंग इन दिस क्लाउज, पहले क्लाउज में तो वो कह रहे हैं कि काउंटिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस, लेकिन आगे लिख रहे हैं फ्रॉम द डेट ही केम टू नो अबाउट द ऑफेंस. either the police came to know about it or the aggrieved came to know about it. And further they are writing the date when the offender was known. तो जो फाइनल डेट होगा कॉग्निजेंस का, that will not start from the date of offense. जो limitation period कॉग्निजेंस का स्टार्ट होगा, that will not be the date of offense. that would not the knowledge of the date of offense. वो डेट भी नहीं होगी जो उसके नॉलेज, जब उसके नॉलेज में आई थी, but that will be the date of the knowledge of the offender. If when we read all these three clauses, that would be the final point. On the date of offense, or where the commission of the offense was not known to the person aggrieved by the offense or to any police officer, the first day on which such offense comes to knowledge of such person or to any police officer, whichever is earlier. So suppose this is the date of when the offense was committed, and this is the date when the aggrieved came to knowledge, when the offense came into the knowledge of the aggrieved person on this date. सेकंड क्लाउज इसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट क्लाउज इसके बारे में बात कर रहा है. एज पर क्लाउज 2 जब नॉलेज में नहीं था उसके एग्रीव्ड के, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी. अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को डेट पता पड़ा, पुलिस ऑफिसर को बाद में पता पड़ा, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सेकंड क्लाउज की, फ्रॉम द दिस पॉइंट विच एवर इज अर्लियर. अगर पुलिस ऑफिसर को पहले पता पड़ गया इधर और एग्रीव्ड को बाद में पता पड़ा, मान लीजिए एग्रीव्ड गया था बाहर कहीं घूमने, उससे पीछे चोरी या डकैती हो गई, उसके घर में चोरी हुई, तो पुलिस ऑफिसर को पता पड़ गया चोरी के बारे में, और एग्रीव्ड बाद में आया, उसको बाद में पता पड़ा. तो विच एवर इज अर्लियर, हुआ जिसको भी अर्लियर पहले पता पड़ेगा उधर से सेकंड क्लाउज की काउंटिंग चालू होगी. Thereafter they are further saying where it is not known by whom the offense, in third clause, where it is not known by whom the offense was committed, where it is known by whom the offense was committed, the first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offense or to the police officer making investigation into the offense, whichever is earlier. First day when the identity of the offender was known. आपको ऑफेंस का फर्स्ट पॉइंट पे पता नहीं पड़ा, आपको सेकंड पॉइंट पे पता पड़ा, और पुलिस को थर्ड पॉइंट पे पता पड़ गया, लेकिन अभी तक ऑफेंडर का पता नहीं चला. यू डोंट नो हु हैड कमिटेड द ऑफेंस. समवेयर हियर द पुलिस ऑफिसर कम टू नो अबाउट द ऑफेंडर, एंड समवेयर हियर द एग्रीव्ड कम्स टू नो अबाउट द ऑफेंडर. दिस इज डेट नंबर 4 एंड दिस इज डेट नंबर 5. डेट नंबर 4 पर पुलिस ऑफिसर को पता चला कि ऑफेंडर कौन है, और डेट नंबर 5 पर एग्रीव्ड को पता चला कि ऑफेंडर कौन है. सो जो फाइनल डेट है काउंटिंग का वो कौन सा होगा इस पूरे एग्जाम्पल में? दैट इज डेट नंबर 4. फर्स्ट क्लाउज डेट ऑफ ऑफेंस, सेकंड क्लाउज डेट ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफेंस, थर्ड क्लाउज डेट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ऑफेंडर. सो फाइनली द काउंटिंग स्टार्ट the date of the knowledge of the offender, and here the counting start from here because whichever is earlier. अगर aggrieved को पहले पता पड़ जाता है then from that, and therefore
एट द फोर्थ पॉइंट, यहाँ से द काउंटिंग विल बिगिन। अब मान लीजिए अनदर एग्जाम्पल, कोई ऑफेंस हुआ इस डेट पर और वहीं ऑफेंडर का पता पड़ गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा था और ए जा रहा था और बी ने आके उसको खींचकर 4 थप्पड़ मार दिए खींचकर। तो उसने ऑफेंडर को देख लिया, तो उसी टाइम नॉलेज में आ गया ऑफेंस की, एग्रीव्ड पर्सन के, किसने ऑफेंस किया, किस पर्सन ने। काउंटिंग भी उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगी। एंड द लॉजिक behind this, that the actual counting was start from the date when the offender was known by the aggrieved person or to the police officer, whichever is earlier. Because अगर स्टार्टिंग अगर हमने यहाँ से कर दी जब ऑफेंस नोन came to the knowledge या ऑफेंस एक्चुअली हेल्ड, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, जब तक एक्सपायर नहीं होगा वो ऑफेंडर भागा रहेगा, और जैसे ही एक्सपायर होने के बाद वो फिर आ जाएगा आपके सामने। Because after the expiration of limitation period as per law, no one can do anything with him. Clause 2. In computing the said period, the day from which such period is to be computed shall be excluded. Means जब काउंटिंग करोगे आप लिमिटेशन पीरियड की, तो उसमें जो फर्स्ट डेट है when you came to know about the offender, that day shall be excluded. मीन्स व्हाट, काउंटिंग तो उसी दिन से होगा, पर जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका खत्म हो रहा है उसके एक दिन आगे लिमिटेशन पीरियड ऐड हो जाएगा। सपोज प्रिस्क्राइब पीरियड आपका यहाँ पर इस वाली डेट को खत्म हो रहा है, देन यू वुड ऐड वन मोर डेट, एक और डेट इधर ऐड कर देंगे। सो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन गेट ओवर हियर, नॉट हियर। जब भी हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर डे बी एक्सक्लूडेड, तो जिस दिन भी हमारा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा होता है उसके नेक्स्ट वाला डे वो ऐड होगा लिमिटेशन पीरियड में। सपोज भी से 10 दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट डे 10 दिन और ऐड हो जाएंगे। दैट इज हाउ द एक्सक्लूडेड पीरियड इज एडेड इन द लिमिटेशन एक्ट। सो सेम विल बी अप्लाई हियर आल्सो। व्हेन, नाउ लेट्स सी सेक्शन 471 फर्स्ट, where the period of limitation expire on a day when the court is closed. The court may take cognizance on the day on which the court reopens. A court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during its normal working hours it remain closed on that day. So it is exactly as the section 4 of the Limitation Act. अब मान लो आपका काउंटिंग जो लिमिटेशन का इधर चालू हुआ एंड समवेयर हियर इट एंड्स। अब आपका जो कोर्ट है इस दिन डेट पे क्लोज हो रहा है एंड कोर्ट रीओपन्स ऑन दिस डेट, इस डेट पर रीओपन हो रहा है। सो कैन द कॉग्निजेंस वुड बी टेकन ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स? क्लियरली दे आर राइटिंग yes, but the question is when would be the court would be say that it is closed. अब suppose the court from 10 a.m. to 4:30 p.m. continues to open. So 10 to 4:30 या 5 whatever the time being, बीच में जो lunch hour होगा उसके लिए तो court will remain closed lunch hour के लिए, but 10 to 1 it would be open and 2 to 5 it is open. So if the court is open for the whole day excepting the lunch hour, then it would be considered the court is open. But suppose 10 to 1 the court was open after lunchtime, then 2 to 1 to 2 lunchtime and 2 to 5 it was due to some reasons the court was closed. या फिर 2 से 4 वो बंद थी कोर्ट और 4 to 5 अगेन ओपन। अगर 2 घंटे के लिए भी कोर्ट बंद था, 1 घंटे के लिए भी अगर कोर्ट बंद था, then it would be said that the court was closed for the purpose for this section. So it would be said that the court was closed for the purpose of this section. So in order to open, the court has to be open for the whole day. So same thing they are saying in the explanation. A court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during its normal working hours it remains closed on that day.
If during its normal working hour it remains closed on that day, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के किसी पार्ट के लिए भी अगर कोर्ट बंद था, then it would be said to be closed for this purpose, and therefore whenever the courts reopens, the cognizance will be taken. And you must always remember that this is a criminal matter, और criminal matters में छुट्टी होती नहीं है कभी कोर्ट में. अगर छुट्टी होगी भी कोर्ट में तो एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा रहेगा कोर्ट में. हर कोर्ट में आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल जाएगा. तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई ना कोई होगा जरूर, संडे को भी, नेशनल हॉलीडे को भी. 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो हर डेट को, होली दिवाली, हर डेट को आपको एक मजिस्ट्रेट मिलेगा कोर्ट में. एंड देयरफॉर फॉर द क्रिमिनल मैटर्स द कोर्ट नेवर रिमेन्स क्लोज्ड. And you also know that the cognizance can be taken by any magistrate. Cognizance के लिए it is not essential that only the area magistrate shall take the cognizance. So the cognizance can be taken by any magistrate. So इसीलिए practically court close होगा नहीं. संडे को भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगा, उनकी ड्यूटी रहती है, पूरे दिन रहते हैं, लेकिन काम उनका कन्वीनियंस देखते हुए वो 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन होते अपने घर पर ही हैं. सो अगर आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया है तो आपको पूरे दिन बैठना है, बट नॉर्मली ये आप पूरे दिन बैठते नहीं हैं. पुलिस वाले एक ही टाइम पर सारा केस लेके आ जाते हैं और वो 2-2.5 घंटे बैठेंगे मजिस्ट्रेट और चले जाएंगे. लेकिन अगर चले भी गए तो वो घर पे रहते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस कैन कम टू योर हाउस ऑल्सो. काफ़ी जगह पर जहाँ घर दूर दूर होते हैं तो वहाँ पे बैठना पड़ता है. यहाँ पर जो क्वार्टर्स वगैरह उनके होते हैं, जो फ्लैट वगैरह हाउसेस, वो पास में, तो वो अपने घर पे चले जाते हैं. सो अगर कॉग्निजेंस का मैटर है ऑन दैट डे द कॉग्निजेंस गोइंग टू एक्सपायर, तो उसको आपके पास ले आएंगे. इवन देन देयर वुड बी हॉलीडे और whatever. Section 472. In case of a continuing offence, a fresh period of limitation shall begin to run at every moment of the time during which the offence continues. Now, what is continuing offence? An offence which is not an one-time offence. An offence which takes place over a period of time. जैसे criminal conspiracy, abduction. एबडक्शन हमारा कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो सकता है. ए को इधर से उधर पहुंचा दिया, एक प्लेस से बी प्लेस पे, बी से सी पे, सी से डी पे. किडनैपिंग नॉट कम्स इनटू कंटिन्यूइंग ऑफेंस बिकॉज जिस समय हम लॉफुल गार्जियनशिप से किसी बच्चे को ले लेते हैं, एट दैट टाइम द किडनैपिंग ओवर्स. द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज डन द मोमेंट द चाइल्ड इज टेकन फ्रॉम द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप. और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप बच्चे को लेके जाओगे, दैट वुड नॉट बी किडनैपिंग, क्योंकि किडनैपिंग तो एक बार हो चुका. उसके बाद तो बच्चे को एक दूसरे से दूसरी जगह पे अबडक्ट कर रहे हैं. क्रूअल्टी की बात कर लें. क्रूअल्टी हो सकता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस. न्यूसेंस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. इंसेस्टुअल रेप, इंसेस्ट रेप. सो इन केसेस में अब क्या होगा? द ऑफेंस इज कमिटेड एट वन प्लेस हियर बट इट इज कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जब जब ऑफेंस होगा तो कॉग्निजेंस तो वहीं से चालू होगा. अब मान लीजिए कोई क्रूअल्टी कर रहा है, आज शादी हुई किसी की. टुडे द हस्बैंड वाइफ गॉट मैरिड एंड इन द इवनिंग टुडे द फर्स्ट एक्ट ऑफ क्रूअल्टी इज डन. टुडे इवनिंग ही हैज डन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द क्रूअल्टी, जैसे डॉरी की मांग करी, स्लैप्ड हर और व्हाटएवर. सो द फर्स्ट एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट प्लेस ओनली. अब ये हमेशा ध्यान रखना दैट ऑफेंस शुड बी पनिशेबल विद 3 और लेस देन 3 years. Then again next day he has committed cruelty. The wife is not allowed to have food. That is again cruelty. And suppose next day the husband goes to some official trip. From there he calls to the wife and said something to her. Then again he has done the cruelty on the next date. So the every next moment he is doing the cruelty. So the offense is committed and therefore the counting will start from there. And as long as the offense continues, the counting will go on shifting. अब मान लीजिए उसने क्रूअल्टी इधर किया और इधर से इधर ख़त्म किया, तो उसकी फाइनल काउंटिंग कहाँ से चालू करोगे? From this place. So that is what they are saying. In a case of continuing offense, a fresh period of limitation shall begin to run at every moment
of the time during which the offense continues. Now let's see section 473. Notwithstanding anything contained in foregoing provision of this chapter, any court may take cognizance of an offense after the expiry of period of limitation if it is satisfied on the facts and in the circumstances of the case that the delay has been properly explained or that it is necessary so to do in the interest of justice. अब मान लो the informant went to the police in time but the police did not take the FIR और विक्टिम 5 महीने तक पुलिस के पीछे चक्कर काट रहा था फॉर लॉजिंग द FIR बट उन्होंने 5 महीने तक FIR नहीं लिया और 1 साल का मान लो उस ऑफेंस का लिमिटेशन पीरियड है 1 साल का लिमिटेशन पीरियड इज 1 ईयर और 5 मंथ तक FIR ही नहीं हुआ एंड वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे 1 साल तक पनिशेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं होगा फिर भी वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस Police did not take the FIR, delayed 5 months. Now only the 7 months are remaining out of 1 year. Then they take the FIR and they deliberately cause the delay in the investigation proceedings. And ultimately, when they file the police report, it is already 1.5 years in the date of offense. Now, when the cognizance is taken, मजिस्ट्रेट ने मान लो कॉग्निजेंस ले लिया इशू प्रोसेस कर दिया अब इशू ऑफ प्रोसेस के बाद एक्यूज ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि ये कॉग्निजेंस गलत हुआ है because the limitation period was 1 year and you are taking cognizance after 1.5 years. So obviously the court has to give up the case because the 1 साल का limitation period खत्म हो चुका है. But in 473 court has duty to do or power to do justice and court may examine why the delay was caused. And if the court comes to know that there was delay in first lodging the FIR, not on the part of the informant, that is on the part of the police, and then the investigation also very loose kind done in the offense. If the court comes to know that, the court may still take cognizance even though the limitation period has expired. तो अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज पुलिस या प्रोसिक्यूटर इनकी वजह से डिले हुआ है और इन्फॉर्मेंट की गलती नहीं है कंप्लेनेंट की कोई गलती नहीं है देन वहाँ पे द कोर्ट विल लिबरल एंड कोर्ट विल स्टिल टेक कॉग्निजेंस एक्यूज्ड के पास राइट है ही कैन ऑलवेज रेज ऑब्जेक्शन बिकॉज कॉग्निजेंस के समय हियरिंग नहीं होती है कॉग्निजेंस के समय एक्यूज्ड वाज नॉट देयर बिफोर द कोर्ट कॉग्निजेंस के समय इट वाज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द इन्फॉर्मेंट एक्यूज्ड नहीं होगा नॉर्मली कॉग्निजेंस के समय पुलिस रिपोर्ट केस में एक्यूज्ड होगा जब चार्जशीट लगता है उस समय द एक्यूज्ड विल प्रेजेंट और अगर आपका लॉयर है तो वहीं पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है दैट नाउ कॉग्निजेंस कुड नॉट बी टेकन बिकॉज टाइम इज ओवर कंप्लेंट केस में जब कॉग्निजेंस होगा वेयर देयर द एक्यूज्ड वुड नॉट बी देयर क्योंकि एक्यूज्ड तो इशू ऑफ प्रोसेस पे आएगा therefore there the magistrate may take cognizance and after that when the issue of process is done and the accused is brought the accused will then raise the objection of bar of limitation and the case have to be given up so police report के केस में accused चार्जशीट के समय प्रेजेंट होगा और वहीं पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है that bar of limitation will apply then the court will always examine whether the delay was caused because of the some wrong on the part of the informant or the complainant or otherwise on the part of the prosecution or police agency. If the later one is correct that delay is due to prosecution or police agency, then the court will still go for taking cognizance. So write down in 473, the court in such a case will examine the interest of justice and it will see whether the delay has been caused due to the informant of the complainant or the complainant. So court will see whether the delay has been caused due to the informant or the complainant or due to the police or prosecution. If the delay is caused due to the police or prosecution, the court will normally be liberal and it will take the cognizance. The court will also be liberal in the cases of socio-economic offences. The socio-economic offences like SC/ST Act, Atrocities Act, Dowry Prohibition Act, Corruption Prohibiting Act, or Food Adulteration Act,
these are the socio-economic offenses that would affect the society at large. So in these kind of offenses, because they are affecting the society directly, the court would be liberal in these type of cases. So one small question here, what is preliminary evidence और pre-charge evidence? चार्ज फ्रेमिंग के समय जो कंप्लेंट केसेस हैं, चार्ज फ्रेमिंग के समय से पहले जब भी आप एविडेंस रिकॉर्ड करोगे, दैट विल बी कॉल्ड प्री चार्ज एविडेंस। और प्रिलिमिनरी एविडेंस वो कंप्लेंट केसेस में जो शुरू में एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड प्रिलिमिनरी एविडेंस। नाउ लेट्स सी सेक्शन 470 इन कंप्यूटिंग। वैसे ये लिमिटेशन पीरियड के साथ अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution. In computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in a court of first instance or in a court of appeal or revision against the offender, shall be excluded. अब ये related है section 14 of Limitation Act, that you went to a wrong court, suppose your matter is a normal matter और आप CBI कोर्ट में पहुंच गए और वहाँ पे कॉग्निजेंस के लिए डाल दिया कंप्लेंट। नॉर्मल ऑफेंस है, CBI से रिलेटेड नहीं है, और आपने उसमें डाल दिया CBI कोर्ट में। वहाँ पे थोड़े दिनों बाद डेट लगा और वहाँ से मना हो गया। अब ये मान लो आपने 2 महीने बता दिए और अब वापस गए हो आप कोर्ट में फाइल करने अपनी प्रोसीडिंग्स। तो जब प्रॉपर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, द 2 months you have spent in the wrong court, there the court has not take the cognizance because it is not having the jurisdiction to take cognizance. Suppose there is a matter you filed before a judicial magistrate second class और 10 अप्रैल को मान लो आपका वो cognizance का पीरियड खत्म हो रहा है। 10 दिन बाद आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है और आपने 1 तारीख को सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दिया अंडर ए बोनाफाइड मिस्टेक, एंड दैट मजिस्ट्रेट, अब डेट वेट लगती है कोर्ट में तो एक आध महीने की लगेगी। जैसे 10 अप्रैल को हियरिंग हुई थी, उसमें डेट लगा दी और मई में दे दी। इन मई द मजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस on the ground that he is not competent to take cognizance. Now you will bring complaint to whom? To the proper magistrate. Now by that time your limitation period is over. और अगर आप प्रूव कर दो that I was acting with due diligence and good faith etc, then that period would be excluded. फिर उतना टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन के पीछे ऐड कर दिया जाएगा एंड देयरफॉर thereafter the magistrate can take cognizance. फिर से देख लो, in computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in a court of first instance or in a court of appeal or revision against the offender, shall be excluded, provided that no such exclusion shall be made unless the prosecution relates to the same facts and is prosecuted in good faith in a court which, from defect of jurisdiction or other cause of a like nature, is unable to entertain it. This will you understand very thoroughly when you will read section 14 of the limitation. So the clause 1 says that this is the day when the counting start here of limitation, और आप अपना मैटर इस डेट पे लेकर किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास चले गए जिसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अब उसने भी ध्यान नहीं दिया, द मैटर गोज टिल हियर और नाउ ही रियलाइजेज दैट he is not having the jurisdiction, then he would pass the order that he is not having the jurisdiction, and due to lack of jurisdiction he is not taking cognizance. Then somewhere here he would go to the proper court. अब this clause is saying that ये जो पूरा टाइम है जहाँ तक ऑर्डर आया है, अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे एक्सपायर हो रहा था मान लो, तो ये जो पूरा टाइम है दैट वुड एक्सक्लूड एंड दिस मच ऑफ पीरियड वुड बी एक्सटेंडेड, इधर आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली योर प्रोसीडिंग्स वुड बी अंडर पीरियड ऑफ लिमिटेशन. Now the proviso says that no such exclusion shall be made unless the prosecution relates to the same facts. Means the facts of the case would be same
and is prosecuted in good faith, and prosecuted in the good faith means it should be the same case, and the person prosecuted went to the wrong court in the good faith. Section 14 is, or limitation is similar to this, and when you study that, it would be easier to you to understand this. Where clause 2, where the institution of prosecution in respect of an offense has been stayed by an injunction or order. Where the institution of prosecution in respect of an offense has been stayed by an injunction or order, then in computing the period of limitation, the period of continuance of injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. अब मान लो हाई कोर्ट में सेक्शन 482 में कोई ऑर्डर पास कर दिया, द प्रोसिक्यूशन इन पर्टिकुलर केस, द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 पास एन ऑर्डर दैट प्रोसिक्यूशन इन रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केस बी स्टेड। अब मान लो कहीं और कोई केस चल रहा है किसी और कोर्ट में, हाई कोर्ट ने 482 में दूसरे केस को स्टे कर दिया, वो और कॉम्प्रिहेंसिव केस है जो दूसरा वाला चल रहा है उसको कंटिन्यू करके इस वाले को स्टे कर दिया। सो उस केस में द डे व्हेन द स्टे ऑर्डर केम, द डे ऑन लेटर ऑन द स्टे ऑर्डर वैकेटेड द एंटायर पीरियड, उस पीरियड में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता था, देन इन दैट केस that period would be excluded. Now the third clause, where the notice of prosecution for an offense has been given. अब आपने पढ़ा है 195 वगैरह, वहाँ पे कभी सैंक्शन लेना पड़ता है और परमिशन फॉर द प्रोसिक्यूशन, उस तरह के केसेस, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गिव नोटिस, उसके खिलाफ सैंक्शन लेना पड़ेगा, देन दे वुड डिसाइड वेदर दे वुड गिव सैंक्शन और नॉट। तो वो जो पूरा पीरियड है जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला उस दिन से जिस दिन आपका एप्लीकेशन के परमिशन ग्रांट हुआ, तो ये जो पूरा पीरियड है इंक्लूडिंग दिस 2 days that will be excluded. Where notice of prosecution for an offense has been given, or where under any law for time being in force, the previous consent or sanction of the government or any other authority is required for the institution of any prosecution for an offense, then in computing the period of limitation, the period of such notice or, as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. तो जब भी आपको सैंक्शन लेना होगा, जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाला, जिस दिन सैंक्शन मिला, और बीच का पूरा पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड। इन कंप्यूटिंग द time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction, and the date of receipt of the order of the government or the other authority shall both be excluded. तो ये तो आपको बता ही दिया, the day when you put the application and the day when you see the order, including those day, the whole period would be excluded. Clause 4, in computing the period of limitation, the time during which the offender has been absent from India or from any territory outside India which is under the administration of the central government. Territory outside India means what? जो फॉरेन एम्बेसीज, जो इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड हैं कहीं पर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिटरी विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया। ना तो आप इंडिया में कहीं थे, ना आप किसी एम्बेसी एक्सेट्रा में थे, क्योंकि एम्बेसी भी ऑल्सो द टेरिटरी विद इन कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो इस केस में उस टाइम के लिए जब से आप गायब हुए हो तब से लेकर जब तक आप इंडिया में आते नहीं हो, वो पूरा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। ये सेक्शन 15 में मिल जाएगा आपको लिमिटेशन एक्ट। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंडर हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया which is under the administration of central government or has avoided arrest by absconding or concealing himself. In computing the period of limitation, the time during which the offender has avoided arrest by absconding or concealing himself shall be excluded. अब अगर एक्यूज्ड इंडिया में भी है
but he is absconding. So the entire period for which he is hiding, that period has to be excluded. So that's it for this lecture. In next lecture we would continue and start with the topic charge. Thank you for watching this lecture.